Friends, this is a direct customer car, Mercedes Benz Maybach S500. So you can see that what kind of people watch us, because we give only unbiased reviews and a genuine content. That's why such kind of people who own a car which is 3 crore rupees, they're watching us and they're sending their car to us so that we can make video. If you want to sell your car, you can contact Moto Finder anytime through WhatsApp only. 9953970666 is my WhatsApp number. Southex में हम ये गाड़ी का shoot कर रहे हैं sir. This is 2017 June month registration, owner second, HP registration, driven 41,000 kilometers with records or without. That we can verify only once we see the service history. And from the body line, the car is intact. It's non-accidental, yes, and few pieces, maybe one or two is repainted because of the Delhi traffic and all. And the car is in immaculate condition. This car was continued till 2014 to 2018, and the last recorded price of this car was 1 crore and 68 lakh rupees was approximately the ex-showroom price, and on road it was coming approximately 195. Today this car comes for 3 crore plus. So 1.20 is the asking price of the customer which he wants, and you need to make the RC payment in which the car is registered. So that is a good thing. HP registration, petrol engine, life is not a concern with this. 9-Gatetronic V8 engine, 4.6 liter petrol engine. It generates 453 bhp and 700 Newton torque at 1800 rpm. Rear seat can be a recliner for you, and you can push the front seat forward. It has got a panoramic sunroof and alloys you can look at. So I'll show you the complete car. So let's start from the front. So this is the original Maybach which you are seeing, dual tone which you can see. So it's a peelable paint, but why do you want to peel off this paint? This is Maybach, you want to show it to the people, right? So the logo is intact. So this car was parked below the trees, so maybe few things which are dirty on the bonnet, but no scratches, no dent I can see. So these are intelligent headlights. So LEDs are there, DRLs are there, and white lights are there. You can see cubicle lights are there, and parking sensors are intact. Front grille is intact. So Mercedes Benz Maybach grille with 360-degree camera with front grille is intact. Everything is intact. सामने से गाड़ी पूरी intact है. See, unbiased review, friends. If you want to see such kind of cars, just one humble request: follow Moto Finder, so that we can get such kind of cars. We need to reach to 5 lakh people, and that only you can do if you subscribe the button. Don't go without subscribing this channel. Scratchless, and nothing needs to be done. This is scratchless piece, this is scratchless, and the rear piece, everything is scratchless, and the body is intact of the car. So if you look at the tires are also in a very good condition. Goodyear के टायर्स हैं इसके अंदर. Mercedes Maybach के alloys मिल रहे हैं इसके अंदर हमें. तो उसमें जो सेंटर पार्ट है alloy का वो मिसिंग है, वो हम ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं सर. इसके अंदर 275/40R 19 इंचेस के हमें alloys मिल रहे हैं. Maybach की बैजिंग मिल रही है, ऑफ कोर्स Maybach पीछे भी बैजिंग है. S500 रियर LED टेल लैंप्स के साथ, ट्विन साइलेंसर्स, V8 इंजन है, इलेक्ट्रिक पूल टेलगेट है, और इसकी जो बूट स्पेस है, दैट्स अनबिलीवेबल, सो ह्यूज. पीछे टायर रखा हुआ है, उसके बाद भी काफ़ी अच्छी स्पेस मिल रही है. इलेक्ट्रिक टेलगेट जो है वर्किंग कंडीशन में है. उसके बाद में ये वाली साइड जो है, यहाँ से थोड़ा सा हम साइड आकर देखेंगे तो ये सब जो है सब कुछ इंटैक्ट है सर. पूरी गाड़ी इंटैक्ट है. एंड ऑफ कोर्स Mercedes Maybach जब आप खरीदेंगे सर, तो कंपनी में एक बार चेक कराना बनता है, क्योंकि 1 करोड़ 20 लाख रुपए की गाड़ी है. डिटेल्स एक बार इंग्लिश में बता देता हूँ. दिस इज जून मंथ रजिस्ट्रेशन, ओनर सेकंड, HP registration, Mercedes Benz Maybach S500 petrol engine, insurance valid for another 9 months. Asking price is 1 crore and 20 lakh rupees. Direct customer car, and it is located at Delhi. Southex. One humble request to you: please watch the video completely and then come to see the car. So let me show you the interiors of the car. Chauffeur driven है, उसके बावजूद बहुत neat and clean, well maintained है. Maybach की बैजिंग यहाँ पे, Mercedes logo, multifunctional steering wheel, heated and cooled seats, of course. Burmester surround system, 30 plus speakers. Seats you can adjust. This seat you can adjust from here. That seat you can adjust from here.
सो एवरीथिंग इज इन वर्किंग कंडीशन। सारे मैंने पीछे कंट्रोल चेक करे हैं, एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह सब कुछ जो है इसकी वर्किंग कंडीशन में है। रियर सीट एक बार आपको दिखा देता हूँ। सो रियर की सीट की कंडीशन भी आप देख सकते हैं, इमैकुलेट कंडीशन है, चाहे वो थाई सपोर्ट और सीट्स हो। इसके अंदर हमें मसाजर्स मिल रहे हैं, रिक्लाइनर मिल रहा है, हीटेड कूल्ड सीट्स मिल रही है। यहाँ पे आर्मरेस्ट नीचे आ जाएगा, 4 सीट कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। ये यहाँ पे आर्मरेस्ट में सामान रखने की जगह, कप होल्डर्स नीचे के ये कप होल्डर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। पीछे यहाँ पे हमें स्पेस मिल रहा है, दिस इज नॉट अ रेफ्रिजरेटर, एंड ड्यूल सनरूफ मिल रही है जिसके कलर्स हम चेंज कर सकते हैं। तो गाड़ी के जो है सारे इलेक्ट्रिकल फंक्शंस जो है सीट्स के वो सारे वर्किंग कंडीशन में है, ये नहीं वो चेक करना बहुत जरूरी है सर हमारे लिए पहले। तो वो हमने आराम से बहुत रील्स बनाई इस गाड़ी के ऊपर, आराम से चेक कर रहे हैं। और पहले तो हम इसको देखते हैं कि ये जो हमारा रिक्लाइनर और जो सीट फ्रंट सीट है वो मूविंग कंडीशन में है। ये पीछे वाली भी हमारा थाई सपोर्ट ओपन हो जाएगा, लेकिन वो सीट इतनी आगे नहीं जा पाएगी। रीजन बिहाइंड के ड्राइवर है सर, आप ड्राइवर के साथ में इतना खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो मेमोरी सीट्स पीछे मिल रही है, बम्बू का सराउंड सिस्टम है, यहाँ से सारे हम कंट्रोल्स कर सकते हैं। ये वाला सनशेड, साइड का सनशेड, रियर सनशेड एंड दिस रूफ सनशेड हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ड्राइवर साइड का जो है वो आगे से ही होगा, पीछे हमें एंटरटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है। तो आज की डेट में सर 3 करोड़ प्लस की गाड़ी है। लास्ट रिकॉर्डेड प्राइस अप्रोक्सीमेटली 168 का था, ऑन रोड इस टाइम 195 के आसपास की आती थी। और वैसे इस गाड़ी की मैं टेस्ट ड्राइव लेता हुआ ही आया था और मुझे इसके सस्पेंशन शॉकर वगैरह सब कुछ ठीक लगे हैं। However, सर देखो मर्सिडीज बेंज मेबैक है, S500 है, तो कंपनी में चेक कराना है, उसका फिजिकल इंस्पेक्शन तो ऑफकोर्स बनता है, ये वो आप करेंगे। और इसकी जो स्पीडोमीटर में वो एक दो लाइट्स आ रही हैं, वो मैं आपको देखकर बता देता हूँ कौन सी हैं। तो गाड़ी के अंदर एक दो लाइट आ रही है, जैसे कि इन ऑर्डर टू सी द एक्सटीरियर मिरर एडजस्ट, ये तो कुछ नहीं है। फ्रंट लाइट मैल फंक्शनिंग आ रही है, कंसल्ट वर्कशॉप। फ्रंट लाइट में कुछ मैल फंक्शन आ रहा है, उसके अलावा और कोई एरर नहीं है। और गाड़ी के इंजन की आपको साउंड सुना देता हूँ, गाड़ी के इंजन के सेल्फ मार के आपको साउंड सुना देता हूँ। इंजन माउंटिंग मुझे इसकी ठीक लगी। ये गाड़ी मैं ही यहाँ तक चलाकर लाया हूँ 1.5-2 किलोमीटर, और इसके बाद अंधेरा हो रहा है सर, एक और गाड़ी की वीडियो बनी है, इसलिए टेस्ट ड्राइव नहीं ले पाऊंगा। आप आगे टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं सब में।